Good afternoon, students. So, today we are going to start with the new lesson, that is water, a precious resource. So, from the name itself, we can understand that the importance of water, that how important it is, how precious it is, and how useful it is. Because without water, we cannot even imagine the life. If life is there, then water is there. Understood? So it is very, very important. We can see that on Earth also, isn't it? That is almost 3/4 of the land, sorry, the Earth, or we can say more than half of the Earth is covered with water. Okay, and that is the reason why it is also called as a blue planet. Our Earth is called as a blue planet, isn't it? The blue planet उसे क्यों कहते हैं? Because of the presence of water. Because of the presence of water, it is blue. Okay, and the living beings, the plants, the animals, human beings on the earth, they need water. They need the water for various purposes. For even in our body also we need water for the life processes. जो हमारे बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, जैसे डाइजेशन है या फिर रेस्पिरेशन है, जो भी प्रोसेसेस है, जो पार्ट जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू द वाटर, दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द वाटर. So you can also say that the blood of our body is more than 80% water. Then even vegetables, they also have more than 50% of water. Whatever we see on the earth, so it contains water as well as it needs the water. So this is the importance of the water. Now, these, that is, we can say, our earth also flourishes because of the water. हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ हरियाली है या पानी है, झरने हैं, ये सब किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द वाटर. पानी जो है वो लाइफ को बढ़ाता है. पानी के अंदर भी लाइफ होता है और पानी के बाहर भी लाइफ है, like human beings. And even though if we are out of the water, that means we are terrestrial animals, but still we need water, isn't it? तो सभी को, पानी के अंदर रहने वालों को भी पानी की जरूरत है, पानी के बाहर रहने वालों को भी पानी की जरूरत है. So, dear students, now we will see the importance of water. Or, as in today's date, we can see that so many problems are arising because of the water. So, we should be very careful. We should be aware to use the water. We should be aware according to the situation that how to manage the scarcity of water, etc. Okay, because in environment we can see that because of the scarcity of water, so many means we can say the situations these are arriving around us. So now here we will start the seeing the sources of water, how to manage the sources, the use of water. Okay, through this. So first of all, the first point regarding this is occurrence of water on the earth. Occurrence. First is occurrence. Occurrence of water on the earth. That means on the earth. That is, if we say
97, that is only 3% is the saline water. So according to the pie chart, ये हमारे pie chart के हिसाब से मीन्स ये जो है पूरा सलाइन वाटर है 97% और फ्रेश वाटर है fresh water is the water that we need for the drinking, we need it, we are using it for various purposes. सिर्फ फ्रेश वाटर ही है जो हम यूज करते हैं, तो ये परसेंट सिर्फ 3 है फ्रेश वाटर का। और सलाइन वाटर कितना है, यानी कि सी का वाटर 97%। ओके, ना वो 3% में, उस 3% में जो है ना, अगेन वी कैन सी दैट ग्राउंड वाटर इट इज 30% एंड ice caps and glaciers are 68.7. These are different, okay? So this is all the numbers, the percentage of water which we are not using actually. यहाँ पर आपने देखा ये जो हम यूज कर रहे हैं, ओके, ये फ्रेश वाटर जो है वो हम यूज कर रहे हैं अभी इसमें भी ना, that is 30.1%. That 30.1% is the groundwater, and the rest, that is 68.7, is the ice caps, glaciers. ओके, तो ये पानी जो है 97% वो सलाइन वाटर है। सलाइन यानी कि द वाटर ऑफ सी, इसको छोड़ के फिर ये जो है ये ग्राउंड वाटर है 30% एंड 90, दैट इज 68.7. It is the ice caps and the glacier. Okay, यानी कि इसमें से भी आप अगर हम देखें तो अगेन हमको पता चलेगा, बिकॉज दिस वाटर ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज। यहाँ पर भी हम ये ग्राउंड वाटर जो है वही यूज करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि जिसका अमाउंट कम है वही हम यूज में ला रहे हैं। देन नेक्स्ट इज द स्वैम्प्स, और रिवर्स तो बहुत कम है, ओनली 2%, और लेक्स बाकी है 87। यहाँ पर थर्ड जो हमारा रिवर और स्वैम्प्स जो है, स्वैम्प्स 11%, 11% है swamps. Swamps means we can say the delta regions, or the region where it is the soil is wet, that is called as the swamps. We cannot get the full water, but water and the soil is very wet, that is the swamp. And rest of the 87% it is the lakes. ये लेक्स जो है ये हमारे ग्राउंड के अंदर, मतलब हमारा जो जमीन है जमीन के अंदर भी हो सकता है ये लेक्स। ओके, सो नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली।
Here, first, almost 71% of the Earth's surface is covered with water. So more than 50%, almost थ्री फोर्थ जो है अर्थ के ऊपर की जो जमीन है वो पानी के अंदर है. दैट मीन्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. कितना परसेंट वाटर से कवर्ड है? 71%. ओके, देन स्टिल वी फेस द वाटर स्कैर्सिटी. सोचो कि इतना सारा पानी है, 71% जो अर्थ है वो पानी के अंदर है, या 71% जो अर्थ का सरफेस है वो पानी के अंदर है. सिर्फ जो हम कह सकते हैं 29% जो है वो पानी के बाहर है, फिर भी हमें पानी की दिक्कत जाती है. सो यू कैन जस्ट थिंक कि अगर ये कम होते होते रहेगा तो हमें कितना सारा और नुकसान या कितना हमें आगे जाके इसका सामना करना पड़ेगा. नाउ it is because most of the water on the earth is contained in the seas and the oceans. तो ये जो यहाँ पर दिया है एक्चुअल में, तो पानी की जो समस्या है ये क्यों आ रही है? बिकॉज ये जो पानी है वो हमारे यूज का नहीं है. ये जो 3% पानी है दैट इज फॉर आवर यूज. ओके, नाउ rivers, lakes, ice caps and groundwater are the other sources of the water. But most of the water is not fit for our consumption. The fresh water that we use is available in a much amount. Means here the amount that we are using for the water is very very less. Now just you can see once again कि ये पूरा जो है वो सलाइन वाटर है जो हम यूज नहीं करते हैं, और ये जो है 3% वो हम यूज करते हैं. So very very little water is used for our consumption. और वो भी आधा तो वो जो है पानी वो फिट नहीं होता है, और आधा पानी जो है वो ऐसे ही कंटेमिनेटेड होता है. बहुत कम पानी जो है वो प्योर होके लोग उसको यूज करते हैं. अंडरस्टूड? सो हियर देन so So this can be again explained by the one example. For example, students, if a bucket full of water represents the total water on the earth, then a mug of about half a liter water shows the total fresh water available on the earth. तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो भी हम एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर देखेंगे. सपोज दिस इज द बकेट. Okay, so this is the bucket, or this is now full of water, और इसमें से ये जो मग है छोटा सा हमने लिया है, जो भी ये मग होगा that is only we can say that half liter of the water. इसके अंदर का इतना ही पानी जो है that is called as the fresh water. यानी कि ये जो पानी है हमारे किसी यूज का नहीं है, इसके अंदर का सिर्फ ये हाफ लीटर मग जो है पानी वो हमारे यूज का है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर नाउ? साउंड नहीं आ रहा है क्या? Okay, so this here you can just understand with the help of this diagram कि ये एक बकेट का सिर्फ मग में अगर हम लेते हैं तो हाफ
नमक जो होता है that is equal to the fresh water. That is equal to the fresh water. Okay. Sound is low. Okay. So here now next is, so we will see now the resources. Okay, resources of water. So, or it is also called as the forms of water. So water is available in so many forms. Water is available in so many forms. Okay, so first we will see forms of water. Now, water is available always in the three stages, isn't it? So उसमें आता है हमारा गैसियस स्टेट, फिर आता है हमारा लिक्विड स्टेट, फिर आता है हमारा सॉलिड स्टेट। तो ये जो स्टेट्स है वाटर के फॉर्म्स हैं, ये भी हमें वाटर साइकिल में देखने को मिलते हैं। These also can be seen in the water cycle. The water, whenever we can see the water, sorry, these forms can be seen in the water cycle. Okay, यानी रेनी सीजन में हमें लिक्विड फॉर्म देखने को मिलेगा, समर सीजन में वाटर जब इवापोरेट होता है तो गैसियस स्टेट में देखने को मिलेगा। देन इन विंटर सीजन स्नोफॉल होता है, या फिर द वाटर गेट्स फ्रीज, so these snow hailstones जो है, so these water it is again converted into the solid form, and this water can be seen in the other state, that is the solid state. So these are the forms of the water. These are all forms of the water, and these can be observed in the water cycle. Okay, these can be observed in the water cycle. So here, we can say that for the living beings as well as for the uses of so many purposes, water is available on the earth, but water cycle, the mechanism that is brought, so through water cycle. तो ये एक मैकेनिज्म है, ये एक हमारा साइकिल है जिसके थ्रू हमें हर साल या हर बार पानी मिलते रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार पानी आके चला जाता है फिर मिलता ही नहीं है। नो, जैसे रेनी सीजन में बारिश होती है, फिर से क्लाउड्स बनते हैं, फिर से बारिश होती है, बारिश का पानी फिर नदियों में बहने लगता है, फिर वहां से वो इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होते होते स्काई में जाके वो कंडेंस हो जाता है, formation of the clouds takes place, and when the clouds are formed again we get the rain back. These rain falls on the surface of the earth, यहाँ वहाँ, और फिर ग्राउंड में भी चला जाता है। So this is all the mechanism which is going on continuously through water cycle. इसी का नाम है water cycle. Understood students? इसी को हम क्या कहते हैं? Water cycle. Understood now? So water on the earth is available in all the three forms. Water is available in all the three forms. कौन से हैं? लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, और ये हमें तीनों फॉर्म्स वाटर साइकिल में दिखाई देते हैं, जो वाटर साइकिल हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था। Understood now? So these water cycle can be seen. Okay, now here ice is the solid state. It is present as the ice caps
at the poles. ओके, तो आइस कैप्स हमें कहां पर दिखाई देते हैं? पोलर रीजन में या पोल्स में, बोथ द पोल्स ऑफ अवर अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, isn't it? Then water, that is the liquid state, is available in the water bodies. लिक्विड वाटर जो है हमें वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है, जैसे रिवर है, लेक है, ओशियंस है, वहां पर हमें लिक्विड स्टेट में वाटर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज द वेपर्स, इट इज द गैसियस स्टेट एंड इट इज अवेलेबल इन द एयर, जैसे ह्यूमिडिटी है, या जब भी हमें पसीना आता है, या जब रेनी सीजन में बारिश आकर फिर सनलाइट हो जाता है, ज्यादा वेदर सनी हो जाता है, तो फिर ये पानी जो है इवोपरेट होके ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वाटर वेपर्स जो है वो एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वाटर इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, in all the three forms. Understood now? And in this way, the water of the earth keeps on changing in all the three states in the form of water cycle. तो ये इस तरह से ये तीनों फॉर्म्स जो है वो कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं और थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। ये तीनों फॉर्म्स हमें जिस प्रोसेस से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। अभी वाटर साइकिल तो बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वंस अगेन आई विल टेल यू, स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल माउंटेन रीजन में फ्रॉम द क्लाउड्स, द वाटर फॉल्स हियर, देन ये जो वाटर है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। ये जो वाटर है जो रेन बन के गिरता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। देन छोटे छोटे स्ट्रीम्स और ये सब मिल के रिवर में आ जाते हैं और रिवर में आने के बाद जब वो प्लेन रीजन में आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे इवापोरेशन भी होते रहता है, it is getting converted into gaseous state through evaporation. ओके, और ये इवापोरेट होके फिर से यहाँ जमने लगते हैं और जमने के बाद जब ये क्लाउड बन जाता है, वाटर वेपर्स हेवी हो जाते हैं, फिर से बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और फिर बारिश होके फिर से गिरने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। ओके, सो ये सब जो है प्रोसेसेस है जो वाटर साइकिल के समय हमें देखने को मिलते हैं। अंडरस्टूड नाउ स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट स्टेप इज इवापोरेशन। ये जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? वाटर या लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। यहाँ देखो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैस और दैट इज द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। So the water from the surface of the earth keeps on evaporating and turns into the vapor, that is called as evaporation. Okay, the water vapor also comes into the air from green plants through the process of transpiration. तो ये सिर्फ इवापोरेशन ही नहीं होता है, यहाँ पर जो ये वाटर वेपर्स हमें देखने को मिलते हैं वो ट्रांसपिरेशन से भी आते हैं बाय द ट्रीज। So the trees also give the water
from the they take the water from the ground and give into the air. That is called as transpiration. That is called as transpiration. Understood, students? Now next is condensation. So यहाँ condensation, that is the formation of clouds. So here what happens? The vapor in the air gets cold and condenses to form the clouds. जहाँ का cloud formation होता है उसे कहते हैं कंडेंसेशन, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। लास्ट में प्रेसिपिटेशन। सी यहाँ बारिश होने लगती है। प्रेसिपिटेशन, when the water condenses enough that the air cannot hold it, फिर वो बहुत हेवी हो जाता है और फिर वो हेवी होने के कारण बरस जाता है in the form of precipitation. Okay. At higher altitudes, the condensed water from the clouds also falls in the form of snow. जहां पर ज्यादा ऊंचाई होती है वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, ऐसी जगह पे पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स सॉरी इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ नॉट द फॉर्म ऑफ रेन बट इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ओके, तो जहां वो पानी फ्रीज हो जाता है वो स्नो बन के गिरता है। अंडरस्टूड नाउ? दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। दिस इज ऑल्सो वन अनदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? देन लास्ट कलेक्शन। अभी ये गिरने के बाद क्या होता है? ये कलेक्ट होता है इधर उधर से पानी। ओके, सो द रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड रन्स ऑफ द नियरेस्ट वाटर बॉडी। धीरे धीरे ये कलेक्ट होते होते छोटे छोटे स्ट्रीम्स में से छोटे रिवर में जाएगा, रिवर में से बड़े रिवर में जाएगा। इस तरह से ये मिलते मिलाते बड़े रिवर का रूप ले लेता है। सो हियर some of this water seeps down into the underground. ये कुछ पानी जो है वो अंदर भी चला जाता है, अंडरग्राउंड। इट गोज अंडरग्राउंड। सो कुछ पानी अंडरग्राउंड चला जाता है, कुछ पानी इवापोरेट हो जाता है, कुछ बारिश बन के नीचे का आता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में बारिश का पानी रहता है। ओके, सो हियर यू कैन सी नाउ most of the cities and towns get water through municipal water distribution system. तो बड़े बड़े सिटीज में इवन हमारे यहाँ पर भी म्युनिसिपल सिस्टम से ही पानी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बड़ा टैंक होता है और वो बड़े टैंक से फिर पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। The water drawn from the rivers, lakes or pond is purified and supplied through a network of pipes. तो सबसे पहले पानी रिवर से बड़े टैंक में आता है, म्युनिसिपैलिटी का टैंक होता है, म्युनिसिपैलिटी के टैंक में वो वाटर अलग अलग स्टेप्स में प्यूरिफाई होता है। अंडरस्टूड? डायरेक्ट टैंक में नहीं जाता है, प्यूरिफाई होते होते लास्ट में वो टैंक में स्टोर होता है और फिर टैंक से वो सप्लाई होता है थ्रू वेरियस पाइपलाइंस। ये अलग अलग पाइपलाइन से फिर म्युनिसिपैलिटी के सिस्टम में या म्युनिसिपैलिटी इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सिटीज में, टाउन्स में या विलेजेस में। ओके, अंडरस्टूड नाउ? देन नेक्स्ट, but in the rural areas such system is not available. In many villages people have to walk several kilometers to fetch the water. तो ये तो म्युनिसिपैलिटी का हम कह सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी का सिस्टम है, बट विलेजेस में म्युनिसिपल सिस्टम नहीं होता है, टैंक नहीं होते हैं बड़े बड़े, तो दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स।
They have to face so many problems. They have to go so many kilometers by walk to bring the water. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना उनको तकलीफ होती है पानी लाने के लिए, एक एक घड़ा पानी लाने के लिए कई कई किलोमीटर उन्हें पैदल जाना पड़ता है. अंडरस्टूड नाउ? Is it clear? So it is very difficult, very hard work they have to do to get the water. हमें तो नल खुला कर दो तो पानी मिल जाता है, but it is not so easy. और day by day the percentage of water, the underground level of the water is going down and down. So we have to use the water very, very carefully. Remember that, students. Okay. तो ये बात ध्यान में रखना है कि दिन ब दिन ये पानी का यूज जो है हमें कम भी करना है और सोच समझ के इसका यूज करना है. अंडरस्टूड? पानी फेंक नहीं देना है, अगर एक्स्ट्रा है तो फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है, उसका यूज प्रॉपरली करना है. Efficiently we have to use. Understood now? Because we know that so many people they don't get water to drink also. They don't get proper water to drink. Understood, student? So they are living without water. They don't get proper water to drink like that. So they draw the water from nearby sources such as wells, springs, hand pumps, etc. But from where do these sources get water? So now these sources of water, that is next source, underground water, that we will see tomorrow. Okay, the underground water that we are going to see it tomorrow. Is it clear, students? So thank you.